कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोलसंकुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वंदे श्रीविखनोर्नवं। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीमदादिवराहक्षेत्रे श्रीवेंकटाचलक्षेत्रे कृष्णाकावेर्योः मध्यप्रदेशे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे बहुलपक्षे षष्ट्यां शुभतिथौ इंदुवासरे पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ मम గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య భక్తులందరూ కూడా మీ గోత్రనామధేయములు స్మరించుకొని స్వామివారికి మీ కోరికలను ప్రార్థనలను వినవించండి. సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष
चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम लोक कल्याणार्थम सत्संतान सौभाग्य प्राप्त्यर्थं च श्री श्रीनिवास करुणाकटाक्ष वीक्षणामृत परिपूर्ण फलावाप्त्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवम् आचार्यमुखेन वयं कारयिष्यामहे। सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। जजस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यस्यद्वरदवक्त्राद्याः पारिशुद्ध्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमते विघ्नसे नमः। भृगुमरीच्यत्रकश्यपेभ्यो नमः। भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यताम्। आसनमन्त्रस्य वसुव्याः मेरुपृष्ठर्षिः छन्दः श्रीकूर्मो देवता आसने विनियोगः पृथ्वीत्वया धृता लोका देवीत्वं विष्णुना धृता पञ्चधा यजमां देवी पवित्रं कुरु चासनम् अशेषजगदाधारमनन्तं कूर्मरूपिणम् आसनस्य विशुद्ध्यर्थमात्मानन्तं भजे हरिम् हम् अनन्तासनाय नमः यं योगासनाय नमः त्वं विमलासनाय नमः ह्रं कूर्मासनाय नमः। प्रणवस्य परब्रह्मर्षिः दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः। ओं भूः भूर्भुवस्सुवरोम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतत् शेषाचलनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोककल्याणार्थं श्रीमद्वैखानसभोच्छास्त्रोक्तमार्गेण क्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाण अंकुरारोपण बीजावापन रक्षाबन्धन अग्निप्रतिष्ठ माङ्गल्यपूज प्रधान प्रवेश लाजहोमादि समस्तकर्मसु स्थण्डिलपरिधिपरिस्तरणादि सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च सद्भिर्महाजनैः सह सुपुण्याः कर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु सप्तसु जमानसेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि धत्तागुं सुचिरगुं सुशर्मा इदमापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः अस्मिन् करके ओं येते शतं वरुणजे सहस्रं यज्ञयाः पाशाभृताः पुरुत्रा
तेभ्यो नजेन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्या ओं भूः ऊर्णमावाहयामि ओं भुवः प्रचेतसमावाहयामि ओं सुवः रक्तां परधरमावाहयामि ओं भूर्भुवः सुवः यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः यदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि वरुणाय नमः एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरीयादि सर्वोपचाराः अस्मिन् कर्म निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयो यस्माद् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो नशम्भो वैराजन्ते सुहृदनिधत्ताम् प्रैषामधूषो उपधानामनादिः यामे शस्तां धनितां दधातु पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओं भुवः शान्तमावाहयामि ओं स्वः हरमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः अमितमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि तद्वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जया सहित श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः यदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरीयाभरणादि सर्वोपचाराः भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाज्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवे वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सत् द्रविणोदा वीरवते मिषन्नो द्रविणोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्त्यदेवा यत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्भट्कुरुवेदोपव्युषं यथा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः अद्य मया पूर्वोक्तये गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि स्थण्डिलपरिधिपरिस्तरणादि सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च पुण्या भगवद्यजकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः अद्य मया पूर्वोक्तये गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि स्थण्डिलपरिधिपरिस्तरणादि सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च पुण्याः भगवद्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ते पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ते पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ते अर्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदस्सवीराः ओं भूः अद्य मया पूर्वोक्तये गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ श्रीभगवदाज्ञया श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि स्थण्डिलपरिधिपरिस्तरणादि सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च पुण्याः भगवद्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धेः समृद्धेः पुण्याहं समृद्धेः
आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यपदमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्यक्षजा युजिन्वथा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णः शुचजः पावका यासु जातः कश्यपो यास्विन्द्रः अग्नीया गर्भं दधिरे वरूपास्तान आपश्यग्गस्यो न भवन्तु या सागुं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानां मधुश्च्युतश्चुचयो याः पावकास्तान आपश्यग्गस्यो न भवन्तु यासां देवादिविकृण्वन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीं वजसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपश्यग्गस्यो न भवन्तु शिवेन मा चक्षुषा पश्यता पश्यवया तनुवोपस्पृशतत्वचं मे सर्वागुं अग्नेगुं रप्सुषदो हुवे वो मयवर्चो बलमोजो निधत्ता यददस्सं प्रजतेरहा वनदता हते तस्मादानद्यो नाम स्थता वो नामानि सिन्धवः यत्प्रेषिता वरुणेन ताश्रीभगुं समबल्गता तदा आप्नोदिन्द्रो वो यतैस्तस्मादापो अनुस्थना अपकामग्स्यन्दमाना अवीवर्तवोहिकम् इन्द्रो वशक्तिभिर्देवेस्तस्माद्वार्नामवोहितम् एको देवो अप्यतिष्ठत्स्यन्दमाना यथा वशम् उदानिशुर्महेरिति तस्मादुदगमुच्यते आपो भद्रा घृतमिदाप आसुरग्नि सोमो बिभ्रत्यापयुक्ताः तीव्रोरसामधिप्रजामरङ्गम आमा प्राणेन सह वर्चसागन् आदित्यश्यां यतवा शृणोम्यामा घोषो गच्छति वाङ्न आसाम् मन्ये भेजानो अमृतस्य तरुः हिरण्यवर्णा अद्रुवं यदावः आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यपदमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्यक्षजा युजिन्वथा आपो जनयथा जनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षे यतस्व पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा यत्वा येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधरधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरजश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां शर्वपुत्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्राणागुस्वधितिरुवनानागुं सोमः पवित्रमित्येतिरेभन्नो वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का परम पवित्र कैंकर्य संपन्न होने वाला है। इसमें मिट्टी के पात्रों में अंकुरण के लिए 9 धान्यों के बीजों को डाला जाता है और उन्हें अंकुरण हेतु रखा जाता है। इसे ही अंकुरार्पण सेवा कही जाती है। अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण कैंकर्य है क्योंकि किसी भी दैवी उत्सव में यह अति अनिवार्य माना जाता है। अन्यथा दैवी उत्सव नहीं रह जाता, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। इसलिए अंकुरार्पण अत्यंत ही अनिवार्य है। इसका एक और महत्व है, वह है कि अंकुरण के अनुसार ही भविष्य की गतिविधियों का निर्धारण होता है। जैसे कि
राजनीतिक, प्राकृतिक, सामाजिक घटनाएं जो घटती हैं हमारे संसार में, वे सब उनकी भविष्यवाणी इस अंकुरण के अनुसार ही की जाती है। इस प्रकार से यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं। इस परम पवित्र तिरुमला के पावन पर्वत से, और इसका सीधा प्रसारण हमको दिखाया जा रहा है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से, और हमें इसका पूर्ण लाभ देने के लिए यह प्रत्यक्ष प्रसारण किया जा रहा है। आइए हम सब भगवान के चरणों में अपना प्रणाम प्रेषित करते हुए पूर्ण आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ इन भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करें। इस दर्शन का इतना महत्व बताया गया है कि इससे हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है अगर हम इसके दर्शन अपने पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, विश्वास के साथ करें तो हम तर सकते हैं, इस माया मोह के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने अनादिकाल से अनंत जन्मों में केवल इस संसार में ही आनंद ढूंढा है। यद्यपि हर जीव, हर प्राणी केवल आनंद की ही तलाश में है, प्रतिक्षण वह आनंद चाहता है, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो पशु हो, चाहे जलचर हो, थलचर हो, चाहे मनुष्य हो। प्रतिक्षण उसे सुविधा चाहिए, आनंद चाहिए, अनुकूलता चाहिए। थोड़ी भी परेशानी हुई तो वह उस परेशानी को दूर करने के प्रयास में लग जाता है। केवल आनंद ही आनंद हम चाहते हैं, और वह आनंद हम ढूंढते हैं इस संसार में, जबकि इस संसार में आनंद है ही नहीं। केवल वह आनंद है, जो आनंद है वह केवल परमात्मा के पास है, क्योंकि परमात्मा ही स्वयं आनंद स्वरूप है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी उसी परमात्मा के अवतार हैं, महाविष्णु के अवतार, परब्रह्म हैं, जो कि कलयुग में आए हैं हम सब का जीवन धन्य करने के लिए। आइए हम सब भगवान को प्रणाम करते हुए अपना जीवन धन्य करें, क्योंकि परम पिता ही हैं वे, सबके आश्रयदाता ही हैं। उनकी केवल एक ही शर्त है, वह है कि पूर्ण समर्पण हम करें उनके चरणों में, और सदा सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भग स्वस्ति देव यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्वृभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति न अदिते कृधे स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महे स्वस्त्यजनन्तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाजसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहेम अम्भोम च माङ्गिरसङ्गजं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रजतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे शुभयन्न अस्तु शुभगं शुभं शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। स्वामी बालाजी के इस कल्याणोत्सव में अब बारी है भगवान को रक्षाबंधनम बांधने की। भगवान का विवाह है यह माता श्री देवी भूदेवी के साथ, अतः उन्हें वर रूप में पूजित करते हुए उन्हें अलंकृत किया गया है।
अब उनके हाथ में भी ऐसे ही रक्षाबंधन बांधा जाएगा जैसे वैदिक विवाहों में वर और वधू को बांधा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी वर हैं और दोनों माताएं वधुएं हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी परमपिता हम सब का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। परमपिता इस सप्त पर्वतों के पार तिरुमला में वे मूल विराट मूर्ति के रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं अपने स्थिर रूप में। लेकिन ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यह हमारे सम्मुख जो है जिसकी पूजा की जा रही है, वे हैं मलयप्पा स्वामी। ये वेंकटेश्वर स्वामी के ही उत्सव मूर्ति हैं। इनकी ही पूजा होती है हर उत्सव में। ब्रह्मोत्सव में भी इन्हीं की ही पूजा की जाती है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की यह लीला ही है कि वे स्थिर रूप में गर्भगृह में खड़े हैं और दर्शन दे रहे हैं मूल विराट मूर्ति के रूप में। और ये जो भगवान हैं हमारे मलयप्पा स्वामी, ये भी उनका ही रूप है और उत्सव मूर्ति के रूप में ये चर रूप में भक्तों के पास आकर के अपना दर्शन दे रहे हैं। ये भगवान की असीम कृपा है। हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। लोक क्षेमार्थम लोक कल्याणार्थम यह कल्याणोत्सव संपन्न किया जा रहा है। जिस प्रकार से अर्चक स्वामी ने सर्वप्रथम हम सब से संकल्प करवाया था इस कल्याणोत्सव के प्रारंभ में। आइए हम सब संकल्पित हैं और भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन पूर्ण आस्था विश्वास के साथ करें। प्रतिदिन यह विवाह महोत्सव 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पवित्र पर्वत पर संपन्न होता है और हम सब को उनका दर्शन देने के लिए श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल इसका सीधा प्रसारण कर रही है। इस चैनल का संचालन कर रही है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के समर्थवान कर्मचारी गण इसमें लगे हुए हैं भगवान की सेवा में। और पूरे संसार में यह टीवी के माध्यम से यह कल्याणोत्सव हमें दिखाया जा रहा है। आइए इस दुर्लभ अवसर का हम लाभ लेवें और अपना जीवन धन्य करें, क्योंकि भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन सदा नहीं हो सकता, यदा कदा ही होता है। और वो एक क्षण आना चाहिए, क्योंकि भगवान यह दुर्लभ अवसर हमें प्रदान करते हैं और हम सब जो इसके दर्शन कर रहे हैं ये हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल ही है। अन्यथा हम इसका दर्शन करना हमारे लिए संभव नहीं है। भगवान की कृपा ही होनी चाहिए उनकी भक्ति करने के लिए। इसलिए हम पर ये कृपा हुई है भगवान की और हमें इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। समस्त सृष्टि में ब्रह्मांड में यह तिरुमला का क्षेत्र अत्यधिक पवित्र माना गया है। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति कहा गया है। वेंकटाद्रि यानी कि यह तिरुमला पर्वत के जैसा ब्रह्मांड में कोई भी पवित्र स्थान नहीं है। यह वैकुंठ है। हमारे परम आचार्य भगवान के परम भक्त संकीर्तनाचार्य श्री तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इस तिरुमला को वैकुंठ के नाम से अपने संकीर्तनों में अभिवर्णित किया है। इस प्रकार से हमें इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए और अपना जीवन धन्य करना चाहिए, अन्यथा यूं ही हमारा जीवन चला जाएगा। भक्ति करें, भक्ति करें, भगवान का स्मरण करना ही भक्ति है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वशांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान ने
चैलेंज किया है गीता में कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा सदा के लिए परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए हे भक्त, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। एक बार भक्ति का जो अंकुरण हमारे हृदय में अंकुरित हो गया है, उसे हमें बढ़ाना होगा, उस भक्ति के पौधे को और भी सिंचित करना होगा। स्मरण से भगवान के सच्चा स्मरण करें और अपना जीवन धन्य करें, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो करके हमें सदा के लिए आनंदित कर देंगे, हम माला माल हो जाएंगे। इसके लिए गुरु की भी आवश्यकता है। किसी परम भक्त, शास्त्रोक्त के नियमों को जानने वाले परम भक्त को गुरु बनाइए। वो जो भगवान का साक्षात्कार भी कर चुके हैं। ऐसे भक्त मिलते बहुत कम हैं, लेकिन हमें देखना होगा ऐसे परम भक्त भी हैं संसार में। गुरु के चरणों में अपना शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। अब भगवान के विवाह में अग्नि प्रतिष्ठापन किया जाएगा और अग्निदेव को साक्षी मानकर उन्हें विवाह संपन्न शुद्धोर्यं निधारय शुद्धो मध्य सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्नानि दासुषे शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाचं सिशाससे मयि देवाद्रविणमायुजन्तां मयि आशेरस्तु मयि देवहोतिः दैव्या होताराश्याम तनुवासुवीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्यागोदित्सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कदमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी माहास्महि प्रजया मातरोभिर्मारथामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन् पुरस्तादब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चयन्तु नुगतः पुनस्ते मीशां चित्तं प्रबुधा विनेशतु उद्धन्यमानमस्यामेध्यमुपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रभुभक्तिरप्रसन्नो माता पृथिवी तोकसाता पूतह्यतनेन सौम्याः कृणुद्भगुं रचना होत विगुंशतु अष्टाबन्धगुं रचनाभितो हरय्येन देवासो जनयन्नभिष्क्रियाः सूर्येण ब्रह्मर्दुधा विदुरथैकं चक्रं यद्गुहातदहं विश्वे देवासो अनुदन्मानजातग्श्रोत्रं ते चक्रे आस्तां द्विपन्थाः चराचरुष्टे ते पुत्रं वृणीत पूषा यतजातकं शुभस्पतिवरेयं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जातवेदो भुवनस्य रेत इह सिञ्चतपसो यज्जनिष्यते अग्निमश्वत्था दुधहव्यवाहकं शमी गर्भात् जनयन् योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयोनिरग्निर्घृतैः समिद्धो घृतमस्यान् घृतपृषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुजजा यक्षिदेवान् आयुर्दा अग्ने हविषोजुषाणो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आयुः प्रजागुं रजमस्मासु धेह्यजस्रोदेधिनोदरोणे अग्न आयाहि वीतजे गृणानो हव्यदातजे निहोता सत्स बर्हिषि अयं तेजो निररुत्वयो यतो जातो अरोचथाः तञ्जानन्नग्न आरोहाथानो वर्धयारयिम् इदमाप शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः अदितेरुमन्यस्व अनुमतेरुमन्यस्व सरस्वतेरुमन्यस्व देवसवितः प्रसवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्ध्या उमा अस्य विष्ठाः सतश्च यो निवसतश्च विवः ओं भूर्ब्रह्माणमावाहयामि ओं भुवः प्रजापतिमावाहयामि ओं सुवः पितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवः सुवरहिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमधेनुगुं सोम अर्वन्तमाशुगुं सोम वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदच्छगुं सभेयं वदश्रवणं यो ददाशु तस्मै ओं भूः स्वममावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्ववरुन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि
प्रोक्ष यज्ञं देवतावृद्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीणागं सुकृता यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावृद्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीणागं सुकृता यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रोक्ष पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो यज्ञे स्थो वायुभूते स्थो विष्णोर्मनसा भूते स्थो यज्ञस्य पावने स्थः परशुरसि पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसवितः प्रसवपुनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आपो देवीरग्रे भवो अग्रे गुवो अग्रे यमी यज्ञं यताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतवृत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतमुदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतः सोधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि गन्धर्वोऽसि विश्वावसुर्विश्वस्मादीशतो यजमानस्य परिधिर्ड ईडितः इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण यजमानस्य परिधिर्ड ईडितः मित्रावरुणोत्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा यजमानस्य परिधिर्ड ईडितः गन्धर्वमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि मित्रावरुणमावाहयामि सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पादुकस्याश्चिदभिषस्त्याः उपरिष्टात् देवारक्षन्तुकस्याश्चिदभिषस्त्याः अधस्तान्नागारक्षन्तुकस्याश्चिदभिषस्त्याः वीतिहोत्रन्द्वागवेद्युमन्तुकं समिधीमह्यग्ने बृहन्तमध्वरे समिदसि समिदस्यायुषे त्वा परिस्तीर्यमग्निं परिदधां यज्ञे अग्निगुसृतां वेदिमभिमन्त्रयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यासि देवेभ्यः शुन्धस्व पृथिव्यावो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु सुवो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषाय वः अनया पृथिव्यावो गृहीष्यामि ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि यजमानवासिं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावृद्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीणागं सुकृता यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवासिं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावृद्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीणागं सुकृता यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रणय को वः प्रणयति स वः प्रणयत्वापो देवीः प्रणयानि यज्ञकं घृतपृष्ठा उदागसहस्रभोषं यजमानेन यञ्चतीः को वो यनक्ति स वो यनक्तो संविशन्तान् देवीर्विषः पात्राणि देवयज्ञायै तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भो स्रवं गृह्णामि भुवः स्रवं गृह्णामि शुभः स्रवं गृह्णामि भोर्भुवः शुभः स्रवं गृह्णामि राजस्पोषाय त्वा स्रवं गृह्णामि विष्णोर्हस्तौ पोष्णाहस्ताभ्यां बृहस्पतिर्तानुग्रस्रवं गृह्णामि दक्षिणप्रणदौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणदौ देवेन अज्ञादीन् अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसोनावाहयामि मरुत आवाहयामि रुद्रानावाहयामि उपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पोषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतस्वमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्ञपात्रे प्रजापतयजुष्टन्नर्भवामि इन्द्रायजुष्टन्नर्भवामि अग्नयजुष्टन्नर्भवामि सोमायजुष्टन्नर्भवामि अग्नयजुष्टन्नर्भवामि सोमायजुष्टन्नर्भवामि अग्निशोमाभ्याञ्जुष्टन्नर्भवामि प्रजापतयजुष्टन्नर्भवामि ब्रह्मणयजुष्टन्नर्भवामि इन्द्रायजुष्टन्नर्भवामि वसुभ्योजुष्टन्नर्भवामि मरुभ्योजुष्टन्नर्भवामि रुद्रेभ्योजुष्टन्नर्भवामि उपस्पृश्य श्रीविष्णवेजुष्टन्नर्भवामि बृहस्पतयजुष्टन्नर्भवामि मित्रायजुष्टन्नर्भवामि वरुणायजुष्टन्नर्भवामि आदित्येभ्योजुष्टन्नर्भवामि अश्वभ्याञ्जुष्टन्नर्भवामि पोष्णेजुष्टन्नर्भवामि कक्षायजुष्टन्नर्भवामि कक्षदेवतसोमायजुष्टन्नर्भवामि उपासनयज्ञायजुष्टन्नर्भवामि यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्योजुष्टन्नर्भवामि सर्वदेवेभ्योजुष्टन्नर्भवामि आज्यं तृप्त्यधिसृजामि चरं तृप्त्यधिसृजामि अग्ने ज्योतिरसि समिधसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तर्गतं वृक्षो अन्तर्गतारातयः प्रत्युष्टकं वृक्षः प्रत्युष्टारातयः चित्पतिस्त्वापुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वापुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्तासु पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां घृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षता आज्या चरुभिः
इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च अयुतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्बुदं च निर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्थश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्तो अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा षष्टिशतसहस्रान् युतमक्षयमर्बुदमानया अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने धियस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् आघारकर्मणि ब्रह्मन् सोम युद्धमाधात्से आधत्स्वा समेधय स्वाहा वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेव विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिघार्याचरं सावित्र्या गृहीत्वा जुह्वायाहृतिर्जुहोति ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव सुव स्वाहा अदितेन्मग्गुस्थाः अनुमतेन्मग्गुस्थाः सरस्वतेन्मग्गुस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि उपासनाग्नौ कृता आघारान्ते स्वरमन्त्रतन्त्रश्रुतिविपर्यासा न्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषद्वैष्णवाहुतेर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा अतो देवा वन्दनयतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभ्यः स्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यवचक्षुरात तद्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाग्रवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्गुस्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव सुव स्वाहा अदितेन्मग्गुस्थाः हनुमतेन्मग्गुस्थाः सरस्वतेन्मग्गुस्थाः देवसवितः प्रासावीः పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము విభ అప్సరవముని గణమున కలదే విభవము లగొనని గణము శ్రీ సతి పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవఘనసే నమః నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగ్వత్రికశ్యపమరేచి ముఖాన్మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురూన్ ప్రణమామి మూర్ధ్నా అభవాయ మనోభవాయతే జలజాతోదర సంభవాయ చ జగతాం ప్రభవాయ సాక్షిణే గురువర్యాయ నమో నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాద్భుతంత్యయౌవనస్ఫుట అచింత్యాద్భుత పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తార్ణవృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణా మణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదేకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యుషోవతి ఇత్యష్టదేవ పురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతి వరుణవాయుకుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలబలయితే లవణేక్షుసురాసర్పిర్దధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాలమలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వేపదీపితే మహేంద్రమలయ సహ్యశుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరు తామ్రగభస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవరుణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీవేంకటాచలక్షేత్రే శ్రీరంగస్యోత్తరదేశే శ్రీ అహోబలగురుడాచలస్య పూర్వదిగ్భాగే సత్యవ్రతక్షేత్రే సకలదేవతాసన్నిధౌ సకలజగత్స్రष्टुः పరార్థధ్వజజీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయపరార్థే प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि द्वितीययामे 13 घटिका 24 घटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरोहोतनाम देवेन्द्र समये पार्थिवकूर्म प्रलयानंत श्वेतवराह ब्राह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे
स्वायंभुव स्वारोचिषोत्तम तामसरेवतचाक्षुष वैवस्वत सूर्यसावर्णि धर्मसावर्णि दक्षसावर्णि रुद्रसावर्णि ब्रह्मसावर्णि इंद्रसावर्णि वेदसावर्ण्याख्या चतुर्दशमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्रैकसप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्वतीतेषु तदुपरि अष्टाविंशतितमे अष्टाविंशतिसहस्रान्वित सप्तदशलक्षाब्दे कृतयुगे याते षण्णवतिसहस्रान्वित द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे याते चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे याते द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाख्य शिक्षकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन शके मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घात कालसोत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यो तीर्या तुलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतुलापकर्षणक्रमेण सर्वराश्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्र आप्तोर्याम शान्तमनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमादप्रमादसम्मादवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोप्यसामीप्यसारोप्यसायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतच्छेषाश्रनिवासिनः श्रीश्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं परव्योह विभवान्तरयां यर्चा स्वरूपरूपगुण विभवैश्वर्यादिनिरूपक श्रीविघ्नोमरेन्द्रमतानुसारिभिर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिर्दिव्यमहर्षिभिरुक्तगृह्यधर्मशास्त्रपुराणेतिहासप्रणिपातित कन्यादानकल्पोतसकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशानङ्ग दिव्यपञ्चायुधालङ्कृतकोटिसूर्यसमप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्यूहभेदेन प्रवर्तमानस्य परव्यूहविभवान्तर्यां यर्चावताररूपकस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोऽन्नत्रे आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयस्वकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसबारोहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिकिरण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार भगवतः प्रद्युम्नावतारकस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसबारोहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटकटक केयूरहार दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यमाल्योभिशोभिताय दिव्यपीताम्बरधराय प्रपन्नपारिजाताय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय द्विजावताराय अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्यतेजो दिव्यरूपकाय अखिलशाखाध्यायिनौ अखिललोकपवित्ररूपाय श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जाताय श्री श्रीनिवासपरब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वणयज्ञसूत्रोद्भवीं सकलवेदशाखाध्यायिनीं भार्गवच्यमन आप्नुवान ऊर्ववेदलपञ्चारुषेयप्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गणासंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां
भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् अयोनिजाम् श्रीदेवी नाम्नीम् इमाम् कन्याम् वृणीमहे दास्यामि। ऋग्यजस्सामधर्मणयज्ञसूत्रोद्भवीम् चतुर्वेदशाखाध्यायनीम् काश्यपावत्सारणैध्रुवत्रयाऋषेयप्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकलसुराङ्गणासंसेवितपादारविन्दाम् श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् कश्यपसङ्कल्पतनयाम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् अयोनिजाम् भूदेवी नाम्नीम् इमाम् कन्याम् वृणीमहे दास्यामि। कन्याम् कनकसम्पन्नाम् कनकाभरणैर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोकचिकीर्षया। कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाय सुमेधसे प्रजतोऽहम् प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये। विश्वम्भराः सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमाम् कन्याम् प्रदास्यामि। प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो। परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं। वे हमारा कल्याण करने के लिए इस तिरुमला के पावन पर्वत पर अवतीर्ण हुए। तालपा का अन्नमाचार्य जो कि भगवान के परम भक्त थे, 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में उन्होंने ही इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया था। तब से 600 वर्षों से यह परम पवित्र कल्याणोत्सव निर्बाध गति से चल रहा है। यह भगवान की असीम कृपा ही है। आइए हम सब अपने भाग्य को सराहते हुए इस सौभाग्य को प्राप्त करें और इसका पूर्ण लाभ लेवें। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव अत्यंत ही दुर्लभ होता है। जब भगवान की कृपा होती है और हमारे कई जन्मों का पुण्य हमें प्राप्त होता है, तब जो है जाकर के इस कल्याणोत्सव के दर्शन होते हैं। अब भगवान ने दर्शनों के अवसर तो प्रदान कर दिए, लेकिन इसका लाभ हमें तब मिलेगा जब हम पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ इसका दर्शन करें, परम पिता का ध्यान करें, निरंतर ध्यान करते रहें। तब जाकर के इस स्मरण भक्ति के द्वारा ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमें सदा सदा के लिए आनंदित कर देंगे। प्रत्येक जीव का लक्ष्य जो है वह आनंद प्राप्ति ही तो है। चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, मनुष्य हो, वे सब भगवान से केवल आनंद ही मांगते हैं। मांगते भगवान से हैं, लेकिन दौड़ते माया की तरफ है, संसार की तरफ है। माँ बाप, भाई बहन, पिता, धन, प्रतिष्ठा, पद, संपत्ति, इन सब के पीछे हम भगते रहते हैं, भागे रहते हैं। सदा ही हमें इसमें आनंद मिलेगा, 1 करोड़ में आनंद मिल जाएगा। 1 करोड़ रुपए मिल गए, फिर 2 करोड़ की। ओम प्रजापति राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथ सीता सावित्री मांगल्यतंतुना नेन लोकरक्षण हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षन्तु शरदां शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यभरणधारणं करोमि। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथ सीता सावित्री मेदिनी देवी वसुंधरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणागं श्रोत्रं विष्णुर्मनः
माङ्गल्यतन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षन्तु शरदां शतं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यभरणधारणं करोमि ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును प्रजामंसदमृत्युभाषात् तदेवं राजा वरुणो न मन्यता यथे यज्ञस्ते पौत्रमखन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायताङ्गारः पत्यः प्रजामंसदमृत्युभाषात् तदेवं राजा वरुणो न मन्यता यथे यज्ञस्ते पौत्रमखन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायताङ्गारः पत्यः प्रजामिस्केन यत दीर्घमायुः अशोन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रबध्यतां यज्ञ स्वाहा ओं भूः स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवः शुभ स्वाहा अदितेन्मग्गुस्थाः हनुमतेन्मग्गुस्थाः सरस्वतेन्मग्गुस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्य इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् इयन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागुम्रसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थाममृतागुम् अनु विश्वा उत त्वया वयन्धारा उदन्या इव अधिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् इयन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागुम्रसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थाममृतागुम् अनु विश्वा उत त्वया वयन्धारा उदन्या इव अधिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् इयन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवः शुभ स्वाहा अदितेन्मग्गुस्थाः हनुमतेन्मग्गुस्थाः सरस्वतेन्मग्गुस्थाः देवसवितः प्रासावीः
ओम भूः देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि लाजहोमान्ते स्वरमन्त्र श्रुतिविपर्यास न्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहतेर्होष्ये हतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा अतो देवा अमन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवे वचक्षुरात तद्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदगुस्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन्मग्गस्थाः हनुमतेन्मग्गस्थाः सरस्वतेन्मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् एतत्कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा यदस्य कर्मणोत्किरीर्षं येन मिहाकरम् अग्निष्टस्पष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्पष्टकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नजे स्पष्टकृते सुहतहुताहतेनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नजे स्वाहा अग्नजेन्नादाय स्वाहा अग्नजेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमनुष्मै स्वाहा अग्नजे स्पष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराहार्जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनादिमञ्चक्षुराधत्तमक्ष्यो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसुनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्ध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनेभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा स्वाहा समिदसि तेजो मयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणा धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तजो नेरावृणस्वाघृतेन स्वाहा अर्थधान विद्वान निष्ठघृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तगु स्वाहा वेदर्भक्तगु स्वाहा ज्योर्भक्तगु स्वाहा पृथिवीभक्तगु स्वाहा ओषधवनस्पतिगन्धर्वा सरससेवभक्तगु स्वाहा अग्निर्जीर्णगु स्वाहा वेदर्जीर्णगु स्वाहा ज्योर्जीर्णगु स्वाहा पृथिवीजीर्णगु स्वाहा ओषधवनस्पतिगन्धर्वा सरससेवजीर्णगु स्वाहा समन्तां बर्हिर्हविषावृतेन समादित्यैर्वशभिः सम्मर्द्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यन्नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्त्रप्यतो वेदिस्त्रप्यतो ज्योस्त्रप्यतो पृथिवीत्रप्यतो ब्रह्माद्यास्त्रप्यन्ताम् ओषधिवनस्पतिगन्धर्वा सरसस्यैवत्रप्यन्तां मे दक्षिणतः पितरः पितामहाः प्रपितामहाः साक्षयमस्तु तर्प्यन्ताम् अदितेन्मग्गस्थाः हनुमतेन्मग्गस्थाः सरस्वतेन्मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतस्मै मे एकश्रेष्ठाः प्राच्यां दिशि देवा ऋतुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् सर्वानन्यान् प्रजमोह्य ग्रन्थेन विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदजस्थतिमं गच्छतो नो वृष्टिमेरज स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं
भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्यः सोमे नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणा जचक्षसे योगशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतेरङ्गमामवो यस्यक्षजा जिन्मथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयेन्द्रजन्द्रजन् मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासना विद्युतन्तमया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां श्रीकृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीयज्ञपुरुषनारायणार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यध्यात्मनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में विवाह होम के पूर्णाहुति संपन्न हुई है। सभी देवताओं को उनके उनके हविष्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया है। परम पिता का यह विवाह सृष्टि में कण कण में आनंद प्रदान करने वाला विवाह है, क्योंकि परमपिता स्वयं ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। भगवान का यह कल्याणोत्सव अति पवित्र है, कल्पनातीत है। परमाणु पुलकित हो जाता है जब भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन होता है, क्योंकि समस्त सृष्टि में ब्रह्मांड में भगवान स्वयं ही है। अब भगवान के वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी दोनों जगन माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं और परम पिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी भरद्वाज गोत्र के मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में प्रकट हुए हैं। और ये द्वितीय माता वधू जो हैं, ये धरती माता हमारी भूदेवी जी हैं। ये कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं। इस प्रकार भगवान अपनी परिणय लीला का दर्शन करा रहे हैं समस्त सृष्टि को, और उनका एक ही ध्येय है कि हम सब उनके चरणों में समर्पित होकर के संपूर्ण आनंद प्राप्त कर लें, क्योंकि आनंद वहीं पर है, भगवान के सिवा और कहीं आनंद नहीं है। इस संसार में आनंद जो दिखाई पड़ता है वे सब पंच इंद्रियों द्वारा अनुभूत किए जाने वाले आनंद, शब्द रूप रस गंध इत्यादि जो है ये क्षणिक हैं, नश्वर हैं, ये नहीं टिकने वाले, और अंततः ये जो सुख है यह दुख में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से भगवान का इस कल्याणोत्सव दर्शन करें, प्रणाम करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికి
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ